हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल स्कॉलर क्लासेस में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ रिगार्डिंग टर्म 2 एग्जाम्स जो अभी चल रहा है फॉर क्लास 10 और क्लास 12। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे देश के बहुत सारे एरिया से ये रिपोर्ट आ रहा है कि जो एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चे कोविड पॉजिटिव का शिकार हो रहे हैं और क्या बच्चे आगे के एग्ज़ाम्स दे पाएंगे या नहीं, इसी के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स चिंतित और यही कारण से बहुत सारे पेरेंट्स भी टेंशन में है। तो डियर स्टूडेंट्स, घबराने का कोई बात नहीं है। सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस को इशू किया था बहुत पहले ही रिगार्डिंग कोविड प्रोटोकॉल्स। तो एग्जाम्स के दौरान अगर बच्चों कोविड पॉजिटिव का शिकार हो जाती है तो क्या करना चाहिए, तो उसी के संबंधित ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स का ये क्वेश्चन है कि कैन अ स्टूडेंट हु इज कोविड पॉजिटिव अपीयर फॉर द सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम्स? इफ येस, देन हाउ? Is it compulsory to appear for the term 2 exam? If the student does not appear for the exams, then how would the CBSE result 2022 be calculated? तो इन्हीं के आंसर्स में सीबीएसई ने बताया है, इन अ केस अ स्टूडेंट हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड वेदर सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन आइसोलेशन रूम फॉर द चाइल्ड टू sit and write his or examination. For the child to sit and write his examination. If the student has high-grade fever but has a negative RT-PCR report, the examination center would still facilitate an isolation room for the students to sit in and appear for the examination. If a student is not in a physical state to appear for the examination, it may be noted that it is not compulsory. Should a student miss the term 2 examination, CBSE would evaluate the student as per his performance in term 1 and internals. In case your child is COVID positive, please reassure the child health continues to be of paramount importance. The second thing to do is inform the child's school. The school in turn would then share the details to the child along with a copy of the RT-PCR report with the examination center superintendent. The school in turn would then share the details of the child along with a copy of the RT-PCR report with the examination centers. The CS of the exam center would then make the provisions for the child to write the exam in an isolation room. In case the child is unable to appear for the examination, the school authorities then need to inform the center superintendent of the exam center about absence and also write to the CBSE regional office. The school need also share the RT-PCR report with the CBSE on the given email address for the board's record. There is no reason to panic. If there is a case, parents need only inform the school and the schools have been instructed on the protocol for such a situation, CBSE officials say.